there was these people, a couple who was honeymooning in Thailand or something. So they were on a honeymoon in Thailand, and this is staying कि किसी होटल में वो लोग रुके हुए थे. उस होटल में they started having all these experiences, seeing things, seeing people who were not there, and experiencing all these sounds and knocking. And so when they asked the hotel staff कि I saw this, ये सब देख रहे हैं हम लोग, and what is going on. That's when they found out कि उस होटल में a lot of people committed suicide in that hotel. So that's why they were experiencing all this, and the reason was that a few of them lost money in gambling and all these extracurricular activities that they used to do. So uske wajah se that hotel is quite active. हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉन्टेड शो। आज हमारे साथ जुड़ी है मेघना पोरवाल मैम। मेघना जी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ कई साल काम किया है और मेघना जी बाय प्रोफेशन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। तो आज हमसे वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो मेघना जी, वेलकम टू द हॉन्टेड शो। Thank you so much for having me. Thank you. सो मैम, आपने कुछ साल गौरव तिवारी जी के साथ काम किया, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? अनफॉर्चुनेटली मैंने गौरव के साथ कभी काम किया नहीं. आई नेवर गॉट द चांस टू वर्क विथ हिम ऑन एन इन्वेस्टिगेशन. बट हाँ, हम लोग मिलते थे काफ़ी. आई मीन एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम टू बॉम्बे, हम लोग यूज्ड टू ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हम उनसे जाके मिलते थे. एंड वी यूज्ड टू लिटरली स्पेंड, जो भी होटल में वो रहते थे हम लोग वहाँ पे जाके उनके साथ पूरी पूरी रात हम लोग वैसे ही रहते थे, उनके साथ बात करना एंड ऑल दैट, टेकिंग हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस, समटाइम्स जस्ट आस्किंग हिम व्हाट्स गोइंग. ही हैड डन दिस शो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया. तो उस टाइम पे जब मैंने वो शो देखा तो फिर उनके आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मैं उनसे पूछती थी इस टाइम पे जब ये हुआ था तो क्या हो रहा था, दिस दैट एंड ऑल दैट. सो या अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी वो मौका मिला नहीं उनके साथ काम करने का ओके, ऑन अ केस. या तो उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने आपके साथ शेयर किए, वो कैसे आपको इस इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मदद में आए? लाइक सर्टन सिनारियोज, लाइक उन्होंने कैसे उस सिचुएशन से डील किया या व्हाट वाज हैपनिंग देयर, तो फिर उन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए कि सो ऑल दैट हेल्प्स इन व्हेन वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशंस कि ओके ना, वी कैन फ्रेम आवर क्वेश्चंस दिस वे आल्सो, या इस केस का हम लोग ये अप्रोच ले सकते हैं, या कैमरा सेटिंग हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं वैसे. सो ऑल दैट हेल्प्स अ लॉट कि व्हेन यू टेक नॉलेज फ्रॉम अ लीडर. सो हाँ, उस तरह से बहुत हेल्प किया है उन्होंने कि समटाइम्स वो जब हम लोग केसेस के लिए जाते थे एंड वी यूज्ड टू शेयर एविडेंस विथ हिम और टेल हिम कि क्या हुआ था, तो फिर इज़ लाइक कि इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, और यू कुड हैव सेड दिस और सेड दैट. All this he used to help us a lot in giving us feedback, so the next case is much better, done in a different way or in a better way. सो मैम, वी गॉट टू नो कि घोस्ट हंटर गौरव तिवारी ये बुक अभी रीलॉन्च हो रही है, तो आप कुछ स्टोरीज शेयर कीजिए जो आपको उसमें से अच्छी लगती है, या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज जो उस बुक्स में नहीं है मगर आपके इंटरेक्शन थी गौरव जी से. Yeah, the book is relaunching in June. Rupa Publications is relaunching the book. I think the best part of the whole book is his journey as a paranormal investigator. How वो जब इस फील्ड में आए थे, बिफोर दैट ही वॉज अ कंप्लीट नॉन बिलीवर. ही डिड नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. वो ट्रेनिंग कर रहे थे कमर्शियल पायलट बनने की फ्लोरिडा में, एंड बिफोर दैट he never believed in all these things, never had any kind of experience and all. So उनकी जो journey है पूरी, right up till the last day, so that journey that has been covered in the book, that is the best part of the whole book, because that is what we connect with most. अभी उनके जो cases हैं जो इस book में, I think that it is more closer to him, but there were cases like when he went to in Australia, जो उन्होंने investigations किए थे, those were some of the most amazing cases that he did, because उनका उधर जो उनको evidence मिले हैं, especially visual evidences जो मिले हैं pictures में,
that was some of the best evidences that any paranormal investigator can capture anywhere in the world. I think those unke jo images, if you check Google में, those are counted as some of the top images of paranormal that you can capture, like full-bodied apparition हो गई हैं, या but he captured a image of a small girl, or a prison guard, or a nurse, things like that, or a school child. Those images like became really famous. जो उन्होंने किया था. So those were some of the best cases that I believe that he's in. Of course, then he went to Bhangar so many times, and he clearly has disapproved the hauntings in Bhangar की. Bhangar is not haunted. उनके जो एक्सपीरियंसेस कुलधरा में हुए हैं या लंबी देहर में, whatever it is. But for me, it is his overall journey, his entire lifespan, that from 2000, from the time that he was in Florida when उनको ये सब experiences होने लगे, till the time that he established Indian Paranormal Society, and till the day of his passing. So that is something that I really like in the book, the way the journey has been covered. The rest is all there. So yeah. सो मैम, ये जो बुक है वो कहाँ मिलेगी हमें, हमारे ऑडियंस को रीड करने के लिए? It will be available on Amazon. Don't know the exact date, June में कब. We will put that out once we get the date from Rupa. सो मैम, आपकी टीम की जो बुक है हॉन्टिंग्स करके, उसमें आपने आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उस बुक के बारे में आप हमें बताइए. So that is वो हमारी सेकंड बुक है, जिसमें एक्चुअली हमारे खुद के केसेस जो हैं, those are mostly cases that we did after Gaurav passed away. So the first book, which is Ghost Hunters Gaurav Tiwari, is mostly all Gaurav's cases, and the second book Hauntings, which is our own cases. Most of the cases जो हैं उसमें residential cases ही हैं, because हम लोग के ज़्यादा cases अब residential ही होते हैं. I think there are about 11 or 12 cases उसमें. Most profound जो अगर आप मुझसे पूछेंगे उसमें सबसे ज़्यादा चिलिंग या ऐसा क्या केस है, तो फिर आई थिंक वो मेरा खुद का जो घर का है, जो एक पैरेलल स्टोरी के हिसाब से चल रही है बुक में. इट्स लाइक दैट हियर. सो एक केस है, एक केस के बारे में वो ऑथर बात कर रहा है, एंड देन पैरेलली ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस इन माई होम. ओके, सो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिस घर में मैं अभी रहती हूँ, इट्स वेरी एक्टिव. ओके, सो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है. सो जो एक्सपीरियंसेस मुझे या मेरे घर वालों को उस घर में होता है, तो वो पैरेलल स्टोरी उस बुक में, उसमें जो एक्सपीरियंसेस हम लोग को हो रहे हैं वो इस तरह से पैरेलली चल रही है उस बुक में. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, वेयर वी आर एक्चुअली सिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मेरा खुद का घर at the end of the book. So as for instance, मैं आपको बताऊँ that मेरे घर में we see these shadow figures walking from one room to the other. And शुरू में जब ये ऐसे हुआ था, तो फिर मुझे ऐसे, I mean, I sleep in the bedroom and मेरा भाई ना लिविंग रूम में सोता है. So and थोड़ा जब मैं किवाड़ को थोड़ा आड़े में बंद करती हूँ, नॉट फुली, लीव इट क्लोज लिटिल बिट, तो एक दो बार ना आई सॉ दिस शैडो फिगर पासिंग बाय फ्रॉम द बेडरूम इनटू द किचन, फ्रॉम द लिविंग रूम इनटू द किचन, एंड आई कुड सी इट फ्रॉम माय बेडरूम. तो मुझे लगा कि मेरा भाई है, वो रात में देर से सोता है, अगर कोई फुटबॉल मैच है तो फिर फुटबॉल मैच देख रहा है, देन ही गेट्स अप इन द मिडल टू ईट समथिंग एंड ऑल. सो पहली बार जब मैंने ऐसे देखा तो मैं वेट कर रही कब मेरा भाई किचन के बाहर जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं. तो फिर मैं उठी और मैं बाहर गई देखने के लिए, तो मेरा भाई सो रहा था. द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग देन आई आस्क्ड हिम कि तो किचन में गया था क्या रात में? ही सेड नहीं, मैं तो सो गया था. मैं तो इनफैक्ट वो कल ही वाज लाइक इनफैक्ट मैं जल्दी सो गया था कल रात में. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है, डिसमिस्ड. 2-3 बार ऐसे हुआ, तो मैंने 2-3 बार फिर उससे पूछा है कि तू किचन में था रात में? ही इज लाइक नहीं. Then I told him कि ऐसे हुआ था, मैंने ये देखा था. I mean, they know what I do, and they believe that what was going on. तो फिर तब मेरे भाई ने एक बार बोला था कि
तब मेरे भाई ने बोला था कि व्हेन वी फर्स्ट शिफ्टेड टू द हाउस इमीडिएटली उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ था, बिकॉज मेरे भाई ने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी हम लोग को नहीं बोला कि उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, या मे बी एक दो बार, बट दैट्स इट. रेगुलर बेसिस पे सिर्फ मेरी बहन होती थी जो बोलती थी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो जो मेरे भाई ने डिस्क्राइब किया कि वो जब लेटा हुआ था तो हम लोग के बालकनी की खिड़की, वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, बट देन दिस क्वाइट अ डिस्टेंस लाइक अ गुड 10 feet का फ्रॉम द ग्राउंड टू आवर बालकनी, 10-11 feet प्रॉब्ली. तो उसने मेरे को बोला था कि उसने बालकनी में ना एक आदमी की शक्ल देखी थी. आई मीन बालकनी के बाहर, नॉट इनसाइड, बाहर शक्ल देखा उसने. इट वॉज लाइक अ फ्लोटिंग हेड. सो इसलिए मैं उठ के, सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या देखा उसने. तो फिर उसने बोला कि वो उठा, बालकनी में गया, वो देख रहा था कि कौन है. आई मीन somebody needs to be 10 feet high to look to reach that बालकनी का, अपना बालकनी. ही इज़ लाइक उसने वो देखा. फिर मेरी बहन ने बोला हाँ मैंने भी उसी को देखा था अपनी बालकनी में. माई सिस्टर हैड अ सेपरेट रूम where she and my niece used to stay. He said, yeah, even I saw the same man. जो मेरे भाई ने डिस्क्राइब किया. इसे मैंने भी उसको बालकनी के बाहर ही देखा था. सेम मैन. बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर ऑन 2 separate occasions saw the same thing. फिर उसने बोला था कि फिर एक बार when he was sleeping in the night, then he saw this woman standing on the balcony. बालकनी से वो चल के दरवाजे तक, मेन डोर तक गई, एंड देन शी डिसअपियर्ड. तो उसने बताया कि वो क्या पहनी हुई थी. इट्स लाइक उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, एंड देयर वाज दिस, ईदर इट वाज अ बिग फ्लावर और समथिंग ऑन हर ड्रेस, और इट वाज ब्लड स्टेन्स ऑन हर ड्रेस. ये उसने डिस्क्राइब किया था कि ये पहनी हुई थी वो. उसके ये दो बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस. एंड देन ऑफ कोर्स वो ही वाज लाइक कि जब वो रात में सोता है तो व्हेन ही हियर्स पीपल टॉकिंग, और ऐसा लगता है जैसे पार्टी हो रही है घर के अंदर, जैसे ग्लासेस का क्लिंकिंग, ये सब होना एंड ऑल दैट. एंड देन से जब मैं उठता हूँ तो वो सब नॉइज बंद हो जाता है. एंड देन व्हेन ही गोज बैक टू स्लीप अगेन, देन अगेन ही हियरिंग ऑल दीज नॉइजेस, एंड स्पेशली ही विल हियर विमेन टॉकिंग अ लॉट, लाइक कॉन्वर्सेशन हो रहा है किसी के बीच में, एंड व्हेन ही विल गेट अप वो सब बंद हो जाता है. तो this was happening in my house. And then of course we used to hear our names being called out जब घर में कोई नहीं होता था. यहाँ पे भी whistling होता था. I mean we used to hear whistling sounds, but a lot of shadow figures used to go. एक बार मेरी बहन ने बोला था कि उसके बेड के एज पर she saw this small child at the edge of her bed. एंड उस टाइम पे मेरी नीस छोटी थी. आई मीन छोटी इन द सेंस लाइक शी मस्ट हैव बीन 7-8. एंड द चाइल्ड वाज जस्ट लुकिंग एट माय नीस उस टाइम पर, एंड सो शी फ्रीक्ड आउट एंड शी लेफ्ट द रूम स्क्रीमिंग विद टुक माय नीस एंड गो मेरे मम्मी के कमरे में. शी वेंट एंड शी स्लेप्ट देयर. सो दिस होल थिंग वाज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द बुक. एंड तो हमने थोड़ा सा रिसर्च भी किया था बिल्डिंग के बारे में. हम लोग को पता चला था कि जब ये बिल्डिंग बनी थी, सो फॉर ऑलमोस्ट 2 years दिस बिल्डिंग वॉज एम्प्टी. नोबडी स्टेड इन द बिल्डिंग एंड ऑल फॉर ऑलमोस्ट 2 years. तो फिर जो बिल्डर था उसने कुछ हवन ववन वो सब किया, एंड तब जाके पीपल स्टार्टेड बाइंग द प्लेस. एंड देन देयर वर क्वाइट अ फ्यू स्टोरीज जो हमारे वॉचमैन, द सिक्योरिटी गार्ड. Now, security guards in the night, they don't like staying in that building because कुछ ना कुछ होता रहता है उन लोग के साथ. So there were these few security guards when we had just moved. तो they were like कि रात में उनको कभी ऐसा लगता है कि कोई उन लोग का गला कोई चोक कर रहा है उन्हें, और they will see something, and they will describe it कि एक दिन वो औरत है, एक दिन वो आदमी है, एक दिन it is something else. But they know that it's the same thing. ऐसा डिस्क्राइब करते थे वो लोग. So all that, these experiences, जो बिल्डिंग की जो स्टोरी है, that when the building was getting constructed,
तो जो मज़दूर, एक मज़दूर था वहाँ पे हु मर्डर्ड हिज वाइफ उसी बिल्डिंग में, बिकॉज ही फाउंड आउट दैट शी वॉज प्रेगनेंट विद अ गर्ल. So he murdered the wife, and that is still an open case actually with the police. Until today, sometimes the cops come to talk and all that. I mean, they talk to security guards only, and that plus there are all surrounding stories. बहुत हैं. The thing with my area is that I stay in. वहाँ पे हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ होता है, right? The reason is because that place used to be a swamp. It was connected to the मारवे बीच. वो पूरा कनेक्टेड था वहाँ पे. वो उसको भर भर के उन लोग ने बिल्डिंग्स खड़ी करके रखी हैं. सो व्हेन दे यूज्ड टू क्लीन अप दैट प्लेस टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो फिर a lot of times these are the stories that we've heard. Okay, there are a lot of times they would find human remains, bones and all that वहाँ पर. So that अभी क्या होता है ना ऐसी जगह पे, they don't do a closure to these spirits जो भी है वहाँ पे जो फंस गए हैं and all, because that was like a dumping ground. And वहाँ पे क्या dump होता था, you can only just let your imagination go wild उसमें, कि आप सोच भी नहीं सकते क्या if they used to find human remains वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे, then you can only imagine कि वहाँ पे क्या क्या होता था. I believe that there was no closure given to these spirits there, or these bodies that were dumped there and all. So that's why इतनी एक्टिविटी है उस एरिया में. So I don't know whether they do that puja and all that to give the spirits that shanti and all that. I don't know whether they're doing all those things. So that's why that area is so active. I mean, a lot of people have said, अरे छोड़ दो, फिर छोड़ के कहीं और चले जाओ, लेकिन कहाँ जाएं? I mean, you can't keep changing places, right? अभी उस एरिया में जितने भी घर हमने बदले, हर जगह कुछ ना कुछ. So you learn to live with it. I mean, as long as it's not harming you or anything, then I don't think there is a problem उसमें. That is it. So that is those stories. And there was this one case that there was these people, a couple who was honeymooning in Thailand or something. So they sent us, I mean, they did not want us to investigate, or they just wanted to share their experience कि वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ था. So they were on a honeymoon in Thailand, and this is staying कि किसी होटल में वो लोग रुके हुए थे. So when उस होटल में they started having all these experiences, seeing things, seeing people who were not there, and experiencing all these sounds and knocking. And so when they asked the hotel staff कि I saw this, ये सब देख रहे हैं हम लोग, and what is going on. That's when they found out कि उस होटल में a lot of people committed suicide in that hotel. That's why they were experiencing all this. And the reason was that a few of them lost money in gambling and all these extracurricular activities that they used to do. So uske wajah se that hotel is quite active. So they just wanted to share that story. With their permission only, we put that story in the book as well. मैम, जिस बुक के बारे में आपने अभी बताया वो कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? अभी इट्स अवेलेबल ऑन Amazon. There could be some bookstores जिनके पास अवेलेबल हो सकते हैं थोड़े बहुत कॉपीज़, बट Amazon पे इट इज़ अवेलेबल. ओके. और ये बुक छोड़ के आपकी कोई पसंदीदा बुक्स हो वो भी आप हमें रिकमेंड करिए इस पर्टिकुलर जॉनर में. It is not okay. I have a few books. I just thought about. I just have a few books, but they're not directly related to the paranormal. But it is, for me, it is a good. It's you get a better understanding of the spiritual realm. So there is a book that I recommend a lot, is The Laws of the Spirit World. That is one book in which. Okay, just read the book. There is another book by a doctor who's actually a neurologist, and he never believed in all these things, but he experienced a near-death experience. उनको हुआ था ND जो बोलते हैं हम लोग. And after that, he started believing in all these things. So that book, I'm not sure the name of the book, and I think it's Dr. Eben Alexander. Is the name of the doctor who wrote that book. I think it's called From Heaven and Beyond or something like that. I'm not too sure.
but I will let you know. I will Yeah, message yeah. you the name of the book. I have that book with me. Paranormal related. These two people are two of my favorite ghost hunters. Ghost hunters. They have a show in the US called Ghost Adventures. So one of them is split with the team now. So he has his own show called Death Walker. So I recommend his book is called Chasing Spirits. So when he was with Ghost Adventures, in this book he's talking about some of the most intriguing cases that they have done, and he's also given like explanations or theories of what happens in the paranormal and how they related each case with what theory. And he's also spoken his book may about these different gadgets that they have that they use, and how does it help in the field. Then there is another investigator who is Zach Bagans. His first book called The Dark World. Here also he's talking about his some of his cases and some theories, and how he has related each case with each theory. So these two books I have read, and I have that in my collection, and I read them. Sometimes it gets just some knowledge because they sometimes they the way they have written the book is like teaching you about the paranormal and how things are. What is this theory about? So that's for me it like to give me a better understanding of what goes on, and how do you understand, how do you give an explanation to whatever is happening. And also those two books, and not related to paranormal, are these two books, Laws of the Spirit World, and I think it's Heaven and Beyond. I think the other one is those two books. Otherwise I read a lot of fiction, Okay. not related at all. And spiritual books, I read a lot of spiritual books. कई सारे लोग हैं जिन्हें इस फील्ड में अभी काम करना है, जो इस फील्ड से रुचि रखते हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस करोगी? जैसे आपने कोर्स से ये सब शुरू किया था, तो अभी अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो कैसे वो शुरुआत कर सकता है इनिशियल फेज में? Yeah, so before I joined the field, मेरे को बहुत, I mean, I believed in this from very beginning. And मैं बहुत सारे ghost shows and वो सब देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सब पता है. I mean, I can just go into the field and I'm an expert in this. But ऐसा नहीं है, because what you see on TV is completely different. So जब मैंने IPS को कांटेक्ट, जब मैंने गौरव को कांटेक्ट किया था, and I told him that I want to join the team, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि there is a course that you need to do first. So I was like, what course? Why do you need to do a course and all? I mean, I know everything because I'm seeing all these ghost shows, तो मुझे सब पता है. So I was like, okay, fine. Then he said so I asked him, why do you need to do the course? So he's like, the reason is because you need to get an understanding of how the field works and how we do an investigation. What are the different concepts and theories, and how do you do evidence analysis, and what gadgets are we using, and things like that. I said, okay. So I enrolled in the course, and it was a basic professional paranormal investigators course. And when I started doing the course, तब मुझे पता चला कि I really don't know anything about this field. I mean, just watching ghost shows doesn't make you an expert. You need to understand how to differentiate between two different types of hauntings or two different types of entities, and what is the difference between an actual manifestation ball of light, or what is an orb, or how will you differentiate all that? वो सब मुझे नहीं पता था. So with this course, I got that knowledge and that expertise as well. So it is an online course, so anybody who wants to do the course with us, they can send us an email at indianparanormalsociety@gmail.com, or you can contact us via our social media, Instagram or Facebook or Twitter, and we will send them the course details. Here's the thing now. Doing the course doesn't make you a paranormal investigator, or doesn't make you part of Indian Paranormal Society. Okay, you need to have that kind of experience. Now, if you're coming into this field to become famous or get fame, वो इस फील्ड में नहीं होता. You won't get all that यहाँ पर. अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने IPS के साथ ज्वाइन कर लिया और आप टीवी पर आ जाएंगे, नो, आज तक हम लोग टीवी पे नहीं आए हैं. So doesn't happen. If these are your reasons to get into this field, then don't do it.
This is not for you. You can earn fame, fortune, whatever through elsewhere. कुछ और करिए. There is no money in this field. If you want to do this, do it because you are passionate about this and you want to help. And not just help people, not just living, even helping the dead. That should be your purpose. अगर वो आपके नहीं है, अगर आपको मुझे फेमस बनना है, मेरे को टीवी पे आना है, मुझे इतने पैसे कमाने, इस फील्ड में ये सब कुछ नहीं है. एटलीस्ट नॉट इन आवर कंट्री. ये जो कोर्स हम लोग देते हैं या और भी कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ जो अगर आप कोर्स करते हैं, दीज आर नॉट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कोर्सेज. We are the ones who are recognizing the course. We are the ones who are providing you the certificate. It's just for us that, I mean, if you do the course with us, it's just for us. We are certifying you that yes, you have passed this course and yes, you have the understanding of the paranormal. So now you can go ahead and create your own team and investigate whatever you want to do. If you are doing it the wrong way, in the sense, if you have done a course with us and you're doing investigations illegal way, without permissions, jumping the fence, not respecting the people, the property, the entities, please do not attach your name with us. Yeah. Right? Because it is, हम लोग पे वो दाग आता है फिर कि ओ ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, आई बिलोंग टू इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी. वी डू नॉट encourage all this. We do not promote all this. Even हम लोग कहीं पे नहीं जाते without proper permissions. Like literally written permissions we need. Right? So if you are not going to do all this, if this field is only for an adrenaline rush, go do bungee jumping. Jump from a plane, paragliding, whatever you want to do. Do not come into this field. We are here because we want to help, to educate, to open people's mind about this field, about the paranormal. We want them to understand कि हाँ ये exist करता है and there's nothing to be afraid of. अगर आपको आपका purpose ये है, then it's fine, you do this. If not, then you cannot make a career. You cannot make a career out of it. No. And yes, you need permissions from your family to do the course as well. थैंक यू सो मच मैम इस शो पे आने के लिए और हमें एनलाइट करने के लिए. Thank you so much for having me. I really appreciate it. Thank you. थैंक यू. आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड शो. थैंक यू सो मच.